So, Ashok, can you see this? Is it Unit 1 print layout design an introduction. okay? Yeah. So we'll move on to the next question. My next question would be, what is the first thing that comes to your mind when you hear the word design? पहला चीज क्या आता है? The first thing that comes to your mind when you hear the word design. What do you think? To both of you, like Hemant and you. The question is to you. When you think of the word design, what is the first thing that comes to your mind? Creativity, good. Ashok? Hemant कह रहा है कि creativity is the thing that comes to his mind when he thinks about the word design. What do you think? Ashok, can you hear me? Sir, yes sir. या अशोक बाहर हो क्या? हेलो. हाँ सैयद सर अभी तो खैर बाहर ही हूँ. कोई नहीं. तो ठीक है. तो let's move on. तो Yes sir. you know, so we see that design is associated with something called creativity, and creativity is an integral part of any design process. The process that you take, the total process from the start to finish, everything depends on some level of creativity and some level of theories as well. Because without those theories, you cannot design, because there is a format for designing, and that format has to be maintained. So no, in not only creativity but also format is also a part of designing, and symbolic representation. And another thing is very very important when you're talking about design is the semiotics and the semantics. Semiotics is symbolic representation of your thought process, and semantic is the meaning that it conveys. So for example, when you're walking in the street and you find where you're very thirsty or you're very sleepy, so you find a symbol where there is a coffee cup and there is a line. So then you think that, oh my god, there is a coffee house there, or a coffee shop there, so you can have a drink there, go and have a drink there. So that is the semiotics and the semantics of that particular design, that that it will be served with a hot coffee, that one single line will decide that that coffee is hot. So that is something a design is all about. It's all about the semiotics and the semantics, the creativity, the theories that falls under that. Okay. So there is a video which I'll show it to you. Show this video to you. This video is very very good video on design. It will give you all the principles and the factors that associated with the designing very easily. So आशु अगर देख रहे तो अच्छा है. No, Yes sir देख शायद रहा हूँ. good सर वीडियो में वॉइस नहीं है क्या? हेलो. हेलो.
juxtaposition of harmonious seen the video. So if we go about the video, so one thing you can understand that design is a combination of different elements, and each and every element has to be there. So when you are planning a design, theoretically, so then this in the planning itself, these elements must be very clearly laid out. So for example, you've got a client. The client has come to you, and the client is wanting something. Now, for example, you are already well versed with the process of design. You start with a designing process just like that. You take a piece of paper and start with the designing process. But you have to clearly lay out that, clearly point out that this is how you have used it. This is the balance part. This is the unity part. This is the pattern part. This is the contrasting part. This is the emphasis part that we have. Now you can ask me a question, sir. अगर सब एलिमेंट्स क्या एक डिजाइन में इस्तेमाल करना है इम्पोर्टेंट नो it's not all the elements it's not important that you have to use all the elements in one design. It may be a combination of 2-3 elements into one design process. Okay, it can't be only one element. It can't be only one element because it has to be just a position of different elements altogether, at least more than 2 of course, because unity is one thing that has to be there. It's a harmonious part of all the design process together. So that harmony must be existing. Okay. The next is you can use any of them. So in the unity you can use contrast with the help of emphasis. For example, you're emphasizing one thing inside the design. For example, there is a flyer that 50% off. So of course 50% off will be the emphasis of that particular poster. Then comes the, in proportion to that you have to design the product. Otherwise, if you be too focused on the discount, the product will not be understood. But whenever there is 50% free, the word free written or the 50% off written, people will first go to that poster and try to say, right, 50% off kya hai, free kya hai. People are more likely to free stuff, right? So that creates the effect of emphasis, and that creates the effect of proportion when you are designing. That what kind of emphasis you are giving to one design and what kind of effect you are giving. So that is the reason why principles of design is very important. Now I'll share a Google Drive link with you. All the videos are there. So it's not not that. audible properly. हाँ क्या हुआ? So you are not audible properly. Oh, yeah. I'm just putting back my. No issues. I hope now I am audible. So there is a drive. That particular drive will contain all the videos. So this particular video is basically based on all the elements of design, and there are these elements only. So if there is a MCQ exam, so at least तो just पढ़ के रहना कि these are the elements of design. That's it. Not, yeah. So this question will be coming. What are the principles of design? So it's based on the video that you just saw. Okay. So what are the principles of design is based on all the video that you have seen. Okay. So we can ask you a question that what are the principles of design? You have to mention all the principles one by one. Done. Moving on to the format, when we talk about, because we are talking about newspapers and we are talking about first because a newspaper is the first thing that print media is all about. Print journalism is all about print media. So whatever design you're doing, the difference between you and a bachelor of design those are doing, is because you are more akin to media-based designs. Their focus about how to design a newspaper. No, our focus is basically based on how to design newspapers, design print media related journalistic stuff. Their focus is much more designing the other things like architecture and design, designing of architecture, maybe designing of interior designs, architectural design, designs of basic designs. But journalistic design is our forte. We will be talking about that in the class only. We will not talk about architecture design, we will not talk about interior design, we are not talking about arrangements of design or fashion design. We will not talk about those design areas.
नहीं मैं बोल रहा हूँ बैचलर ऑफ डिजाइन नहीं मैं पूछ रहा हूँ जर्नलिज्म BAJMC3 same thing, they are studying the same thing, but I'm talking about the difference between us and the bachelor of designs, the first people, उनका अलग है और हम लोगों का जो हम जर्नलिस्टिक डिजाइन कर रहे हैं उनका अलग है. Okay, so there are three forms of format in newspaper. One is called the full format, one is called the tabloid format, and one is called the magazine format. तीनों चीज डिजाइन करने पड़ेंगे. So पहला चीज है कि what, because whenever you opening a software, the first thing they are going to ask you the specifications of the thing, of the canvas that you are going to work on. So how will you decide on the specifications if you do not know what is the size of the size? So herein lies all the size: the full format, the tabloid, and the magazine format. Okay. So the full format is of 16 to 17 inches wide and 21 to 20 inches deep. So you know that how to. So that will be the format. That is the specification that you're going to set. So this thing you have to remember when you're opening the software and you're working on the software, that and it's the newspaper format. The full format is also called a broadsheet. It's also called a broadsheet. Another name of that particular format is broadsheet. Now comes the tabloid. See, when we are coming to a tabloid is a supplementary part of the newspaper. For example, there are lots of tabloids which you get with newspapers, supplementaries. So those can be considered as tabloids. Or there was a very good tabloid which used to come out. It's I think TIS or TT ऐसा कुछ बोल के एक स्कूल में टैबलेट आता था जब मैं पढ़ता था स्कूल में, बहुत पॉपुलर था वो. हमारे यहाँ पे टैबलेट हाउस जर्नल भी हो सकता है, हाउस जर्नल हो सकता है. सो यू कैन डिजाइन वन टैबलॉइड. हाँ ऐसा ऐसा आता है, ऐसा आता है. हाँ, टिंकल इज अ मच मोर ऑफ अ मैगजीन रादर देन अ टैबलॉइड. बट टैबलॉइड इज वो टिस बोल के या TTIS बोल के कुछ आता था. TTIS का एक टैबलॉइड आता था, TTIS टैबलॉइड. TTIS का टैबलॉइड आता था. तो TTIS का टैबलॉइड ये है रहा. TTIS द टेलीग्राफ इन स्कूल्स का एक टैबलॉइड अलग से आता था. ओके. अच्छा, मतलब एक पेज में मल्टीपल न्यूज़ डाल दिया और 1 to 2 पेज मैक्सिमम. छोटा जर्नल नहीं, न्यूज़लेटर. न्यूज़लेटर की तरह. हाँ, न्यूज़लेटर इज काइंड ऑफ अ टैबलॉइड. सो newsletter is kind of a tablet. So what happens is they are 10 to 12 inches wide and 14 to 18 inches deep. Okay. So here deep, yes. Wide and deep. So deep is the depth of it, the length of it, and wide is deep. So when you are designing something, it's called deep. The length is called deep and it's called wide. Okay. Now why it's called deep? Question. क्योंकि सर वो हम ऐसे देख रहे हैं, हम उसको ऐसे नहीं देख रहे. There is another reason why it's called deep. जब प्रिंट कर रहे हो तो उसको तो अंदर भेजना पड़ता है ना, तो इट्स गोइंग डीप इनसाइड द प्रिंटिंग मशीन. तो दैट डेप्थ, अब प्रिंटिंग मशीन का डेप्थ अगर नहीं होगा, डीप नहीं होगा प्रिंटिंग मशीन उतना, तो टैबलेट प्रिंट कैसे करोगे? So the printing machine has to be of this particular size to print that particular. So that is the reason why how deep it can enter the printing machine is the reason behind it's called deep for print media only. मतलब try to think. Got it ना? So there is a A4 size. इसका हाँ A4 size का depth है. Understood? Okay. So the full format of a newspaper तुम लोग print करोगे उसको A3 पेज पे, तो फाइनल प्रोडक्ट जो निकलेगा, जो प्रोजेक्ट तुम्हारा है न्यूज़पेपर का फ्रंट कवर, तो वो होगा A3 पेज पे. ओके. और टैबलेट जो होगा A4 पेज पे होगा. सो टैबलेट इज ऑन फुल फॉर्मेट इज A3 एंड टैबलेट इज ऑन A4 पेज. नहीं, पूरा न्यूज़पेपर डिजाइन नहीं करना है, सिर्फ फ्रंट पेज डिजाइन करना है. फ्रंट पेज डिजाइन करना है. ओके. एंड द मैगजीन is also A4. Magazine is A3 but folded. So हाँ A4 ही हो गया. So A3 folded. हाँ, तुमको कवर पेज फ्रंट एंड बैक बोथ, that you have to design. हाँ. So the magazine has to be designed, the front and the back page, and that same magazine का inside page.
inside page जो middle page होगा. So middle page is very interesting from different kind of magazine. If you see National Geographic magazine, the inside pages बहुत अच्छा से design होता है. So you can work on that design. हाँ, एक image को या तो एक flow of the design को करते हैं. जैसे एक फ्लेमिंगो का एक हाँ हाँ हाँ. वो पूरा यहाँ बॉडी और यहाँ नेक जा रहा था उसका. Beautiful, and the best, all the best designs like that. So you know, so when you are using design formats, so the most important part is knowing that how deep and how these things are. So you know that a full format is A3, tabloid is A4, and magazine is also A4, but A3 folded. So A3 folded becomes A4. Yes, Ashu, any questions? No problem. Ashu will take a look at the recording because we are recording it, right? Moving on. So obviously the larger is the newspaper tabloid format, and then larger is the magazine, because it's no, the tabloid will be larger and then the magazine. Tabloid will be a little bit larger because I told you A4, but the point is the specification there. When we are designing it, it will be a little bit larger. But when it will be printed, you have to fit to scale to print it. But the design will be a little bit larger. ऐसा होता है ना, मतलब ब्रोशर और न्यूज़पेपर के कुछ बीच का कुछ. हाँ हाँ, वो it's a hybrid thing. It's a tabloid is a hybrid thing. It's like 20:9 का. हाँ, tabloid देखो यहाँ पे ना tabloid का कॉलम जो है 1 2 3 4 5 कॉलम्स. मैक्सिमम 5 कॉलम्स का टैबलेट होता है. 8 कॉलम्स का न्यूज़पेपर होगा हो जाएगा, और मैगजीन 6 कॉलम्स का 4 कॉलम्स का मैगजीन होता है. 4 कॉलम्स, 1 पेज 4 कॉलम्स. सो 4 5 फॉर टैबलेट, इसलिए उसको थोड़ा सा ज़्यादा साइज का होता है, एंड 8 कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर. सो इतना याद रखना है कि देयर इज 8 कॉलम्स न्यूज़पेपर, 5 कॉलम्स ऑफ टैबलॉइड एंड 4 कॉलम्स फॉर मैगजीन ऑफ अ पर्टिकुलर पेज. नहीं, रोज नहीं देखते हम, कॉलम्स देखते हैं, एंड कॉलम्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं. बस वही इंपॉर्टेंट है. तो लेकिन ऐसा न्यूज़पेपर भी तो होते हैं जिसमें जैसे फ्रंट पेज ही अगर आप ले लोगे कितना बड़ा इमेज लगा, तो वो 4 कॉलम लेके होगा, वो कॉलम के हिसाब से तुम्हारा जाएगा एकदम. और ए सेंटीमीटर मेजरमेंट में होता है, जो कितना बड़ा इमेज हो सेंटीमीटर मेजर. किसी कोई सा आर्टिकल होता है जो ऐसे लंबाई में, तो सर हम वो भी कॉलम के हिसाब से तो ऐसे जाना. हाँ, कॉलम के नहीं, ऐसे भी अगर हुआ तो ये 5 कॉलम आर्टिकल है सेंटीमीटर. 5 कॉलम 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आर्टिकल, तो 5 कॉलम ले रहा है, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर तक ही वाइड है उसका. तो वाइड हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और जो ब्रेथ है, जो विड्थ है, वो कॉलम में मेजर कर होना होता है. ठीक है, हो गया. सो इट्स ऑल अबाउट द न्यूज़पेपर लेआउट. It's a little bit of a small area of what kind of. This is the only PPT that I'm going to make. Others I don't need require PPT. I'll just explain it. So this is the only PPT I will be making for this class. न्यूज़पेपर डिजाइन करते टाइम क्या लगेगा एटलीस्ट 1.5 से 2 महीने लगेगा. ये स्पेसिफिक्स दिए जाते हैं क्या कि आपको ये वाला जो आर्टिकल है इसको इतना विड्थ और कितने कॉलम का बनाना है, ये पहले नहीं, प्रॉब्लम मैं बताता हूँ. Yeah, that is the thing I'm going to discuss with you. Yes, it will be later discussed also. The issue क्या है ना, ये issue है कि आपको एक न्यूज़ दिया जाता है, आपको 10 न्यूज़ दिया गया. You have to first plan कि कितने न्यूज़ इसमें जाएंगे. Selection of news is very important. Select हो गया, picture select हो गया, सब कुछ select हो गया. Now you have to put it into place, and you have to see that they are fitting or not. If they are not fitting, you are the person who is going to reduce the news. You are the person who is going to expand. You have to ask the reporter कि इसका थोड़ा सा और आपको expand करके देना पड़ेगा. It's up to you to decide if you are cutting it or you are needing expansion of that particular news. So if you are cutting it, will you be giving it to the editor? No, cutting it. That is the reason why news are always in 5W1H format, inverted pyramid style. That is why designers जब काटते हैं ना, नीचे से धड़ काटते हैं. कि वह क्यों काटते हैं? क्योंकि वो 5W1H फॉर्मेट में है. सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट व्हेन वाई तो पहले ही मिल गया ना, और नीचे जो है वो पैराग्राफ वाइज वो काट सकते हैं आप. द न्यूज़ स्टिल स्टैंड्स. दैट इज द रीजन वाई द न्यूज़ फॉर्मेट इज इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल. तो उनको तो फिर पूरा पैराग्राफ काट देते हैं. मैं पूरा पैराग्राफ पहले काट देंगे ना. अच्छा, ठीक है. या पूरा पैराग्राफ काट देंगे. उसको फिर एडिटिंग नहीं करते कि अच्छा इस पैराग्राफ से आधा पैराग्राफ. नहीं, वो पूरा पैराग्राफ काटेंगे. हाँ, पूरा पैराग्राफ निकालना पड़ेगा.
और कोई छोटा न्यूज़ में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. दैट इज द रीजन व्हाई एडिटिंग ऑफ न्यूज़पेपर इज सो डिफिकल्ट. At first page and all the whole thing. It's there are around 10-15 editors who are working simultaneously on the same design online. अभी आ गया कि no online they can design. Like for example, 4 of us are sitting together. We are designing the same thing together. Someone is designing page 1, someone is designing page 2, someone is designing page 20, 22, 26 pages का होता है. एक आदमी नहीं कर पाएगा. एक दिन में तो इम्पॉसिबल है. एक दिन में एक न्यूज़पेपर डिजाइन करना इम्पॉसिबल है ना एक आदमी के लिए. एक आदमी के लिए नहीं सर, एक दिन में इन जनरल करना एटलीस्ट 3 डेज. तुम लोगों के लिए फर्स्ट पेज डिजाइन करना, फर्स्ट फ्रंट पेज डिजाइन के लिए 1.5 महीने लग जाएंगे. मतलब इन जनरल लग जाएंगे. तुम तो एक दिन में भी कर सकते हो अगर यू आर वर्किंग ऑन 18 आवर्स, सो यू कैन डू इट इन वन डे. 7-8 आवर्स में भी कर सकते हो इफ यू आर डिजाइनिंग इट, बट यू हैव टू हैव द कंटेंट रेडी ना. वही कंटेंट मिल जाए और एक बार सॉफ्टवेयर समझना कैसे होता है. तो कैसे डिजाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हो. सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी. उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं. सॉफ्टवेयर इज वेरी इजी. टू नो फोटोशॉप इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. क्योंकि फोटोशॉप का थोड़ा सा है इसमें. फोटोशॉप का इशू भी है कि आप अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भूल जाओगे. भूल जाएंगे. हाँ, तो फोटोशॉप भी है. तुम्हारे सिलेबस में फोटोशॉप भी है, तो थोड़ा बहुत फोटोशॉप भी इसमें आएगा सीखने में. इट्स गुड फॉर एवरीवन दैट दे लर्न दिस. So the compositor, sometimes it's called the layout of the makeup of the newspaper, and whatever I have discussed, it's here only. Whatever we discussed just now, it's there in the. It's called the makeup and dummy. So I was talking about that. पहले क्या होता है, पहले आपको makeup and dummy बनाना पड़ेगा. It's called the blueprint. उस blueprint के हिसाब से ही final design होगा. Like this skeleton. हाँ, skeleton आता है, तो पहले skeleton. So we'll first start making dummy. तो पहले मैं सिखाऊंगा कि डमी कैसे बनाया जाता है. तो डमी तुम फिजिकली सीखोगे डमी कैसे बनाया जाता है. देन यू विल टेक, आई विल गिव अ लिस्ट ऑफ न्यूज़, एंड उस डमी में तुमको सिलेक्ट करके बैठाना पड़ेगा कि कहाँ क्या प्लेसमेंट कैसे करोगे. दैट इज द लर्निंग प्रोसेस ना. अदरवाइज क्या सीखोगे. सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में यूट्यूब से सीख सकता हूँ, XYZ कोई भी यूट्यूब से देख के सॉफ्टवेयर सीख सकता है. यू एज अ डिजाइनर, व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न. You as a designer, as a media designer, you have to learn how to select news and how to place those news inside the dummy. That is your major learning. फॉन्ट भी अलग नहीं कर सकते. नहीं, एक आर्टिकल का 12 you can change the font एकदम. and font typography सब कुछ आएगा इसमें. You have to learn about the typography. कौन सा typography कब इस्तेमाल करना है, शाइन शेरिफ क्या है, शेरिफ क्या है. lot of things are going to come into design, and it's a huge thing. And you have to also know how the eye movement of the human beings work. It's a theory called the Arnold diagram, and I'll teach you that. So a lot of things coming into design and dummy and making dummy. So, and in class some things are of mandatory importance, and मैंने आशु को भी बताया है. You have to bring color pencils, you have to bring geometry boxes, सब कुछ स्केल पेंसिल 2B HB जितने भी पेंसिल्स हैं सब लेके आना है. और हम डिज़ाइन में क्लास में हम डिज़ाइन की तरह करेंगे. एक मैगजीन, एक न्यूज़पेपर मैंडेटरी है हर दिन क्लास के साथ लाना. ठीक है, जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे न्यूज़पेपर मैंडेटरी है. फिजिकल न्यूज़पेपर लाना ही पड़ेगा. फिजिकल न्यूज़पेपर एंड द मैगजीन, वन मैगजीन एवरी डे. दैट वन न्यूज़पेपर इट कैन बी लाइक एवरी डे नया नया न्यूज़पेपर नहीं लाना है. एक न्यूज़पेपर चलेगा. ठीक, ओल्ड न्यूज़पेपर भी चलेगा. ठीक, ओके. सो दिस इज द मेकअप एंड मेकअप द डमी पार्ट विच यू विल बी लर्निंग टू डू, हाउ टू डू. So the blueprint of a newspaper is its makeup and dummy. So I was thinking of interacting it with this particular PPT is made for a larger class. So that is the reason why it's done like this. It's made for a larger class, not for such a small number of classes. So this is a dummy and that is the final output. Okay, photo के लिए हमें screenshot. और लिख देते हैं कि कितना स्पेस का है. 4x3 इंच. तो ये कलर हो गया, वो भी कलर जाएगा तो लिख दिया. एंड हेडलाइन भी लिख दिया कि यहाँ पे क्या हेडलाइन आने वाला है. सो दिस इज द नेम एंड दैट इज द. So this is a very old newspaper, but you can understand at least that what is a dummy and what is a real output. So this is a dummy makeup sheet, dummy sheet, and out of that makeup sheet, dummy sheet, this is the skeleton and this is the final output. So without this you cannot sit for designing. Once you get it approved by me, this dummy is all right and you are going to use the same thing in the software.
So editor does this, editor approves that dummy, and then only the designer sits to do it. So it is something like to and fro होता है कि आर्टिकल आया राइटर से एडिटर के पास आया, एडिटर को कुछ प्रॉब्लम लगी उसमें, हाँ 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 हाँ. So डिजाइनर के पास क्या होता है ना, पहले न्यूज़ आ गया, जैसे 100 न्यूज़ आ गया, 100 200 300 400 न्यूज़ आ गया, ठीक है. Then they select which news has to be go, which news is important for the newspaper. पहले वो डिसाइड होता है, तो 100 न्यूज़ उसमें से सिलेक्ट हो गया. ये एडिटर डिसाइड नहीं करता? नहीं, ये टीम डिसाइड करता है, नॉट ओनली वन बट यू नो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीम डिसाइड करते हैं, ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ टीम डिसाइड करते हैं कि यू नो ऑल टुगेदर कैसे बैठ के कैसे किया जा सकता है, वो डिसाइड करते हैं. ओके. हर दिन होता होगा? हाँ हर दिन अखबार छपना है? हाँ, हर दिन अखबार छपता है, तो हर दिन ये डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है. हर दिन डिजाइन करना पड़ता है? हर दिन. एक चीज और पूछनी थी कि हाँ बोलो. हर न्यूज़पेपर डिजाइनिंग का तरीका अलग है. हाँ. इवन अगर टाइम्स है तो टाइम